Assalamu alaikum. Welcome back to the second part of the first video. In the first video, we learned all three simple tenses, their rules. We did an exercise of that as well, right? So, as I promised, in the second part, we'll be learning all three continuous tenses, right? So, the first continuous tense is present continuous tense. अच्छा, हम इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही समझेंगे, ठीक है? जैसे कि present. What is the meaning of present? Present means the current situation, right? You know, something that is now. Continuous means जारी, जो भी जारी है, right? अब जो भी कहाँ जारी है, present continuous, right? Whatever that is going on, जो भी अभी हाल में हो रहा है, उसके लिए we use present continuous tense. Like you're watching my video, we are learning, I'm teaching, right? You're using internet or whatever. अच्छा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें we talked about the rules, the thumb rules of all tenses, उसके अंदर I told you that with all continuous tenses, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या फिर हम बाकी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की बात करेंगे, तो किसी भी टेंस में हम जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होंगे विल बी यूजिंग वर्ब्स ing फॉर्म. सो द डेफिनेशन इज दैट इज गोइंग ऑन, जो भी हो रहा है इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. रूल्स, which is what are the helping verbs there, is, am, are, verb form, ing, you call it gerund as well. Okay, so let's take an example. I'm appointing him, right? I'm appointing him. As whatever you would like to add here, since it's just an example, और मेरे पास इतनी जगह थी नहीं कि मैं उसको इतनी लंबी लिख सकूं, तो I've just put it like this. तो मैंने एक sentence को complete किया. The next sentence is she's applying for the job. राइट कि भाई वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, ठीक है, एंड दे आर अप्रोचिंग मी और दे आर अप्रोचिंग मी और वी आर मेकिंग फूड और ही इज आर्ग्यूइंग विद हिज सिस्टर. ऑलराइट, नेगेटिव, सेम रूल जो हम बाकी टेंसेस के साथ, बाकी तमाम चीज़ों के साथ फॉलो करते हैं, हम वही यूज़ करेंगे. हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाते हुए. तो इट्स गोइंग टू बी लाइक आई एम नॉट अपॉइंटिंग हिम और शी इज़ नॉट अप्लाइंग फॉर द जॉब. वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रही. इंटेरोगेटिव, यू नो द रूल, व्हाट वी डू इज हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाते हैं. तो एम आई अपॉइंटिंग हिम, इज शी अप्लाइंग फॉर द जॉब, आर यू अप्रोचिंग मी, आर वी मेकिंग फूड, इज ही आर्ग्यूइंग विद हिज सिस्टर, एंड सो ऑन. Next is an exercise, right? So you guys do have the verbs, you guys do have, the formation that with what, type you need to form a sentence. You can pause the video now and make sentences. Your time starts now. Alright, I think that you have perfectly made the sentences. So let's check the answers. Before the answers, if you have not subscribed my channel, do subscribe it now. And if you have any questions, do write them in the comments right now. ताकि आप, video के end तक अपने सवालात को भूले ना. Or, you can simply write them during, while you're watching the video. And I'll be able to answer reading your comments, okay? And I would really appreciate if you guys ask me such questions. So, she's not aiming at her goals properly. Are you arriving now? They are apologizing for their acts. I'm assuming the situation. When are you attacking, right? मैंने यहाँ पे एक question word use किया when. उसका मतलब होता है कब. तुम कब अटैक कर रहे हो, और I'm authorizing this guy for future, and that's it. I hope that आपने sentences
कुछ हद तक सही बनाए होंगे। आई अंडरस्टैंड इट्स लाइक कि आप इतनी जल्दी नहीं सीख पाते कोई भी चीज़, कोई भी नहीं सीख सकता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। If you need, more practice material, you can contact me. I can provide you some practice material, some practice worksheets as well. Okay, now moving on to the next tense, which is a past continuous tense. All right, so where do we use a past continuous tense? हम इसके भी नाम से इसकी definition को समझेंगे। Past का क्या मतलब होता है? Past means माजी, कंटिन्यूस मीन्स जारी। तो ऐसा काम जो माजी में जारी था उसके लिए विल बी यूजिंग ए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो दैट वाज हैपनिंग, जो भी हो रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स एंड द फॉर्म। फॉर्म तो आपको मालूम ही होगी कि हम इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं सिंस इट्स अ रूल, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैं was एंड were। were हम यूज करते हैं we, you, they के साथ, and was we use with I, he, she, it. Perfect. Let's get some examples. Okay. When we got to the house yesterday morning, the baby was drinking a bottle. He was waiting at home all day. वो पूरा दिन घर पे इंतजार कर रहा था. Right? Now you see, सबके साथ हमने ing फॉर्म यूज़ की है, एंड इट्स नॉट लाइक कि हमने कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज़ की हो। अगर आप कहते हैं कि भाई ये सर आपने ये व्हेन शी सेंट हिम द मैसेज में यूज़ किए, तो रिमेंबर दिस इज द पास्ट सिंपल टेंस, और जो पहला सेंटेंस है इज दिस वन इज ए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, so you can read the examples properly. Okay, great. Next, exercise. You do have the verbs, right? So you can simply form, sentences yourself. So the verb you see here is bend, bring, break, fly, build, buy, wear. Now you have got time to make their sentences, right? So you can pause the video. Good luck. Okay. Now I think and expect that you have completely made the sentences. So now you can play the video and check your answers. So now you see the first sentence is with the verb bend. So was he bending the rod? Interrogative था इसलिए हमने was पहले लगा दिया। तो was he bending the rod? ठीक है, मतलब क्या वो rod मोड़ रहा था? Bring, negative, I was not bringing the glass, right? Break, affirmative, she was breaking the glass, right? कि वो glass तोड़ रही थी। Okay, so you can check your answers. I wish, I hope कि आपने सारे sentences के साथ verb की ing form लगाई हो, helping verb सही जगह पे use किए हो, I, he, she, it के साथ was लगाया हो, we, you, they के साथ were लगाया हो. Okay, so now let's go for the other tense, which is a future continuous tense. Future means mustaqbil. In Hindi we call it, bhavishya. Continuous means जारी। तो ऐसा काम जो जारी रहेगा उसके लिए we use future continuous tense. Great. So you see the definition that says that will be happening. जो भी हो रहा होगा. Okay. So now let's go for some rules. So the verbs form is ing form gerund. We all know it. क्योंकि हम तमाम कंडीशंस के साथ gerund ही लगाते हैं। The helping verb is really easy. It's will be. तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा आसानी ये है will वाले में future sentences में कि आपके पास simple एक helping verb होता है। Next, let's have a look at some examples. Okay, so your sentence is I will be explaining the lesson. नेगेटिव में हम विल के साथ नॉट लगाएंगे। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो बी के साथ नॉट लगा देते हैं, जैसे आई विल बी नॉट एक्सप्लेनिंग, तो इट इज़ रॉन्ग।
आप लोग मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे विच इज़ विल, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में भी इफ़ यू सी कि पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी विल बी मेकिंग फूड, हम खाना बना रहे होंगे। वी विल नॉट बी मेकिंग फूड, हम खाना नहीं बना रहे होंगे। एंड विल वी बी मेकिंग फूड, या हम खाना बना रहे होंगे। इफ यू वांट टू राइट दिस एग्जाम्पल्स इन योर कॉपीज, गो अहेड, इसको लिखिए, अपने पास नोट्स बनाइए। कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, अपने किसी टीचर से पूछिए, who will be able to explain this to you very well। और आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, you can ask me for the practice material, you can ask me for anything, right? So now let's go for an exercise. Make sentences with make, dress up, translate, crawl, light, walk, kick। Subjects आपको दिए हुए हैं, you have the subjects, you know in which type you're going to make which tense, right? So go ahead. You can pause the video and make sentences and then resume it to check your answers. Perfect. I think, I hope, I expect that you have made the sentences nicely. So let's go ahead. The answers are she will not be making। अब आप अपनी मर्जी से इसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको वहाँ तक कंप्लीट किया जहाँ तक मैंने कहा था। Will he be dressing up? I will be translating. It will be crawling. We will not be lightning. Will you be walking? They will not be kicking, right? So that's it for now. अब हम next video के अंदर we will learn about all perfect tenses, 3 perfect tenses that are future perfect, present perfect, and past perfect. I hope you have understood it, and I wish that you come in my next video to understand कि भाई present perfect tense में और past simple tense में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर फंस जाते हैं। कंजंक्शन यूज़ करना ज़रूरी है या नहीं past perfect tense में, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई past perfect कंजंक्शन के बगैर सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है। So to know the facts, to know the right answers, go to my next video that I'll be uploading the next day. Alright, so stay tuned, stay connected, keep watching. Don't forget to subscribe the Linguistic channel. Thank you so much. Khuda Hafiz. For more videos, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon.